Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। At the stock market, Sensex gains by 21 points to a fresh all-time high. Nifty also ends at a record high. Ayush Ministry and Science and Technology Ministry signs an MOU to jointly undertake research and development activities. And Centre amends the natural gas tariff authorization and capacity regulations to provide access to natural gas in far-flung areas. शेयर बाजारों में सेंसेक्स 21 अंक बढ़कर ताजा रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर, निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हुआ बंद। आयुष मंत्रालय और विज्ञान और तकनीक मंत्रालय ने संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए समझौता पत्र पर किए हस्ताक्षर। और केंद्र ने दूर दराज के इलाकों में प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए प्राकृतिक गैस शुल्क प्राधिकरण और क्षमता नियमनों में किया संशोधन। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 21 अंकों की वृद्धि दर्ज करते हुए 62,294 के ताजा रिकॉर्ड उच्चतम समापन स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 19 अंक बढ़कर 18,513 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो मिड कैप सूचकांक 0.8% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% की तेजी दर्ज हुई। At the stock market, the Sensex at the Bombay Stock Exchange gained 21 points to close the day at a fresh all-time closing high of 62,294. Nifty at the National Stock Exchange moved up 29 points to a record high of 18,513. In the broader market on the BSE, the mid-cap index rose by 0.8% and the small-cap index added 0.7%. Among the sectoral indices, the Realty Index was the biggest gainer, climbing 1.1%. The Auto Index advanced 0.9%. Energy and the Services Index added 0.8% each. Oil and Gas and the Consumer Discretionary Index rose 0.7% each. Metal Index gained 0.6%. Telecom and the Industrial Index moved up 0.5% each. IT Index added 0.4% and the Tech, Capital Goods and Consumer Durables, Healthcare and the Commodities Index inched up 0.3% each. Among declining indices, the Power and the BankX fell 0.3% each. FMCG Index shed 0.2% and the Utilities Index ended 0.1% lower. Puneet, we saw that once again the FIIs are the net buyers in the market right now in this particular rally where the market has hit an all-time high. What about the volumes? What type of retail participation are we seeing right now? And is that an indication of what is to follow for this quarter? So interestingly, Arjun, we have seen that the foreign investors who had been very bearish on India, in fact, they had been selling over the past 2 years, and we know that there was a record selling spree by foreign investors. They have turned very bullish on India. They have started buying very heavily. And when I look at the derivatives data for FIIs, they have a record plus position, the record buy position in derivatives now in the Indian markets. So which tells me that FIIs are very bullish. We have seen somewhat muted participation by domestic investors, including the mutual funds. In fact, mutual funds have been slight sellers in this market lately. And also when I look at retail investors, what we see is that there is a very large put buying happening in the market. So broadly, as you asked, foreign investors surprisingly have turned very bullish on India at these record high levels.
domestic investors, including the mutual funds, are a bit cautious and their participation is muted right now. So, पुनीत क्या कहेंगे आप, जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर पहुंचा है बाजार, इनफैक्ट आज तो खैर 21 अंक ही बढ़ा है सेंसेक्स, बट एक बार रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाता है तो हल्की सी तेजी भी उसे एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा देती है. सो आपको लगता है कि एफआईआईज का जो रिन्यूड इंटरेस्ट हुआ भारतीय बाजार में उसके बल पर पहुंचा है? और अभी आपको आगे, आपने डेरिवेटिव्स की बात कही, आगे आपको क्या लगता है, जो यूएस फेड ने इंडिकेशंस दिए कि वो अपनी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की जो स्पीड है उसको हल्का करेंगे, उसको देखते हुए एफपीआई फ्लोस पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? तो सोनू, आपने जब जिक्र किया पहले कि जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है मार्केट्स और यहां पर हम पार्टिसिपेशन देख रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो आपको ये जानकर कुछ हद तक हैरानी होगी कि भारत का जो प्रदर्शन है विश्व के सभी बाजारों में सबसे बेहतरीन है. जो बड़ी मार्केट्स है, हम टॉप 10 मार्केट्स की बात करते हैं, तो और अगर हम डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो कि एक ग्लोबल बेंचमार्क है आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट्स के लिए, या S&P 500 को देखें तो करीब वो अपने लाइफ टाइम हाई से 20% अभी भी वो नीचे है. और जो नैस्डैक है वो करीब, विच इज टेक्नोलॉजी लेडन इंडेक्स, इज अबाउट 35% बिलो लाइफ टाइम हाई. और उसके सामने भारतीय बाजार जो है वो अपने रिकॉर्ड लेवल पर है. आपको मैं बताना चाहूंगा, बड़ी मार्केट अगर चाइना की बात करें, चाइना का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो करीब 40%, अब जो हांगकांग इंडेक्स है वो करीब 40% नीचे है लेवल से. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय बाजार, हालांकि विश्व के बाजार काफी नीचे चल रहे थे पिछले दिनों, उसके बावजूद हम इंडियन मार्केट्स ऊपर ही. और जैसे ही हमने देखा कि बाजारों में थोड़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट हुआ, आपने जिक्र किया यूएस फेड का, जो अब वो कह रहे हैं कि थोड़ी पेस ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज है वो कम करेंगे, वहां पर भी जो मॉनेटरी टाइटनिंग थी मुझे लगता है वो अब काफी उसमें ईज अप होगा. उसके आते ही हमने देखा कि यहां पर एफआईआईज ने बाइंग करी और बाजार में नई ऊंचाइयां आई. मेरा अपना अनुमान यह है, अगर आप मुझसे पूछे तो देखिए थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बाजारों में आ सकता है आने वाले कुछ महीनों में, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय बाजारों में अभी आने वाले समय में, अगले 3 वर्ष या 5 वर्ष की बात करें तो बहुत स्कोप है. और मुझे काफी, तो ये रिलेटिव जो आउट परफॉर्मेंस आप बता रहे हैं भारतीय बाजार की, उसके कारण क्या दिखाई देते हैं आपको? देखिए, उसके कारण खास तरह तो यही है जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है. सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो करेंसी की है. भारतीय करेंसी ने, नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट ने, जो इंडियन करेंसी की अगर हम कंपैरेटिव डिवैल्यूएशन देखें तो सबसे कम हुई है. और वो एक मैक्रो फैक्टर्स जो है, अगर आप फिस्कल डेफिसिट की बात करें, टैक्स कलेक्शन की बात करें, रिकॉर्ड लेवल पर टैक्स कलेक्शन भारत में हुई है. तो और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, कई बार ये बात आती है, जिक्र आता है कि पिछले 2 वर्षों में करीब $100 बिलियन हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम हुए हैं. पर आप देखिए रिकॉर्ड लेवल पर रिजर्व थे, $650 बिलियन, $640 बिलियन पर हमारे रिजर्व से, वहां से कुछ हद तक वो घटकर नीचे आए. लेकिन ये पूरी एक जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही रेजिलिएंट अर्थव्यवस्था, और ये पूरे विश्व के इकोनॉमिस्ट ने, विश्व के जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बात अब मान ली है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत रेजिलिएंट है. और एंड वी हैव डन मच बेटर देन मेनी अदर इकोनॉमीज एज वी नो इन द वर्ल्ड. Puneet, since we're talking about the currency valuation, the US dollar index, which is at 106.17 right now as we speak, ever since the index has come down from 113.14 onwards to 106, we are seeing more FII buying into our markets. Why is that the case? Even though we have traditionally always seen that the buying is following how the US markets have been performing, especially in the 3 major stock indices. So, Arjun, you're right. Dollar index is very intricately linked to FII buying because dollar index represents the strength of the US dollar vis-a-vis other currencies. Now, foreign investors basically borrow in America and then they invest all over the world. If the dollar index is higher, that means the dollar is appreciating, then FIIs cannot borrow. If they borrow, then they lose money on the exchange rate. So typically, they don't want to borrow money in the American markets or raise money in the American markets if dollar index is going higher. If dollar index is going lower, then it makes sense for FIIs to raise money from America and then invest elsewhere. So the moment you saw that dollar index started going down from 114, it is now down to 106, we saw the FIIs turned big buyers in India. And not only in India, across all emerging markets. India, of course, is in a remarkable position right now because in last 2.5 years we have seen India's weightage in the MSCI World Emerging Market Index. It has more than doubled. From 6%, we have gone up to 14%, whereas China has come down from 45%, they're down to about 20% now. So clearly, India is the biggest beneficiary
the outperformance by the markets, and therefore FIs are buying in India and investing. अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो निफ्टी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 21 के आसपास है। ये क्या इंडिकेट करता है? हाई वैल्यूएशन है कि रीजनेबल है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जहां तक हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल को अगर देखें तो वो ऊंची अपने एक एवरेज से ऊपर है, और अगर बाकी चीजों को मैं गौण कर दूं, उनकी तरफ ध्यान न दूं, तो डेफिनेटली लगता है कि ये ऊंचे भाव हैं। लेकिन ये पी मल्टीपल ऊंचा है क्यों इन्वेस्टर्स आज इतने हाई पी मल्टीपल पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हाई पी मल्टीपल एक उम्मीद को भी दर्शाता है, एक होप, एक्सपेक्टेशंस कि आने वाले समय में यहां पर अर्निंग्स ज्यादा बढ़ेंगी। हाई पी मल्टीपल हम देखते हैं, आप यदि ग्रोथ कंपनीज को देखें, जितनी भी ग्रोथ कंपनीज हैं वहां पर आप पी मल्टीपल हाई देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हाई पी मल्टीपल पर भी हमारा बाजार टिका हुआ है, उसका मुख्य कारण है कि देयर इज एक्सपेक्टेशन दैट अर्निंग्स इन इंडिया विल राइज। Puneet, you also have the rule of 20, which says that if the price to earnings ratio, along with inflation, both these factors, if it exceeds 20 as a count, then the market is automatically overpriced. But here we are seeing that the PE ratio is high, the inflation rate is high, and yet the equity market is booming. So you're right. Again, like I said, if I overlook other factors, if I overlook the fact that relatively there are no other places in the major global economies where there is growth of 6-7%. In fact, many other countries are struggling with maintaining their fiscal balances. They are struggling with maintaining their currencies. So I think global investors have very few choices. And in India, if you look at this macro situation, I think it is one of the most stable macro environment from fiscal deficit point of view, from currency point of view. Of course, we have a little bit of challenge on the current account deficit because of oil prices. But I think as oil prices also come down, that will become even better for us. But as a standalone principle, I'll say the rule of 20 applies. Right now, I think India is in a sweet spot as far as global investors are concerned. So I think they're preferring to ignore this 20p multiple benchmark, and they're continuing to invest. पुनीत जी, अगर हम जब मार्केट की बात करते हैं, एक हाई पे पहुंच जाता है, रिकॉर्ड हाई पर है बाजार, तो हमेशा ये प्रश्न उठता है कि सिर्फ लार्ज कैप्स ही बढ़े हैं या ब्रॉडर पार्टिसिपेशन है। सो अभी इस एंगल से कैसे आप आंकेंगे बाजार को? देखिए, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल रहा है, और ये हमारी कुछ हद तक ये एक ग्राउज भी रही है इन्वेस्टर्स की कि देखिए, जब इंडेक्स बढ़ता है तो सिर्फ चुनिंदा शेयर्स 10-20 जो शेयर्स हैं निफ्टी के, वो ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन जो अब हमने रैली देखी है, पर्टिकुलरली पिछले 1.5-2 साल में बाजार में देखी है, वो बहुत ब्रॉड बेस्ड रैली है। अगर आप आज के भी आंकड़े देखें तो निफ्टी तो सिर्फ 20-21 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है वो पॉइंट करीब 1% बढ़े हैं। तो और जब भी मिड कैप स्मॉल कैप, क्योंकि यहां पर ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा, छोटे इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है, तो खुशहाली ज्यादा आती है। तो मुझे लगता है कि जो ब्रॉड बेस्ड रैली है, और हमने ऐसा देखा है कि जो लीडरशिप है वो काफी ब्रॉड बेस्ड हुई है, और एक मुझे दैट इज द, इफ यू रियली आस्क मी, द बिगेस्ट पॉजिटिव ऑफ दिस मार्केट हैज बीन द ब्रॉड बेस्ड रैली दैट वी हैव सीन. So traditionally a broad-based rally is based on corporate earnings, except the metal index, where the government has decided to scrap the export duty, and the metal index has gone up by 0.5%. Every other sector is not seeing any such trigger macroeconomically. Why is it that there is a broad-based rally? So, two things. One is, I think in India, the whole culture of investing in the market has really changed in last 3 years. Of course, one can ascribe various reasons to it. I cannot put a single factor important for that. See, the fact is the number of retail investors has gone up from 4 crore just 3 years back to about 8 to 9 crore people investing in markets. And you can see that. I mean, around yourself you can see that lot more people, youngsters, they are putting money into markets. They are investing in the markets. And mostly they invest in mid cap and small cap stocks, because large caps you usually go through the mutual fund route, which is SIPs mostly. But retail participation has increased in largely small cap and mid cap stocks. Secondly, I think if you look at the earnings reports from the small caps and large caps, so-called small caps and mid caps, they have also grown very well. And I think as India's industrial, the economy size grows, from $3 trillion, we have about 2.5, we have $3 trillion now. And as we go to $5 trillion, the MSME sector would also benefit very significantly. Again, I think, if you really ask me, I think market is telling us
that going forward the MSME sector could be a big beneficiary of expansion in India. So पुनीत जी, आपने कहा कि काफी नए जो इन्वेस्टर्स हैं वो जुड़े हैं बाजार से, रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड ये हमने फिनोमेना देखा है पिछले 2-3 साल में, और अब न्यू हाइट्स पर है बाजार. एनी वर्ड ऑफ कॉशन या क्या एडवाइस आपकी होगी ब्रॉडली इन्वेस्टर्स के लिए? नहीं, बिल्कुल. देखिए, कॉशियस स्टॉक मार्केट एक तो बहुत वॉलेटाइल फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे सेंटिमेंट बदलते हैं तो मार्केट ऊपर नीचे होती है. तो ये मैं कॉशन जरूर नए इन्वेस्टर्स को पर्टिकुलरली कहना चाहूंगा कि वो बहुत भावुकता में इन्वेस्टमेंट ना करें. मार्केट नए हाई पर है और वो कोई कॉशियस ना रहे और ज्यादा अपनी शक्ति से ज्यादा, या कोई उनका फाइनेंशियल प्लान नहीं है और ज्यादा स्पेकुलेटिव पैसा लगाते हैं, तो वहां पर देखिए खतरा रहता है स्टॉक मार्केट में. हमने देखा है कि न्यू हाइज बनने के साथ साथ रिस्क भी बढ़ता है मार्केट्स में. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक ऑर्गेनाइज ढंग से पैसा लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कोई लंबा बहुत ज्यादा खतरा नहीं है. अगर इफ यू कीप अ होराइजन फॉर 3 to 5 years ऑफ इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा स्कोप है. लेकिन शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के अगेंस्ट तो मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूं. Puneet, if you look at the VIX in India, it's 13.33. The VIX in the US is under 20 or almost below 21 right now. It's showing indication of low volume. The fear is low. What does this tell you about the market, especially when it comes to new age companies? Paytm, for instance, is trading at 25% of its listing price, which is even lower than what the IPO price was. So how would you, because caution is the word that is being used right now in the program, how would you advise investors? Because technically everybody's investing, but fundamentally, do you think it's a time now to look at fundamentals of the company also? Absolutely. I think fundamentals are essential to long-term investing. And you mentioned VIX. See, VIX usually pertains to the Broadway, the index that so VIX in India pertains to the Nifty 50. And those companies are very stable companies, as you understand. And right now, the index is 12-13, which is historically low. I've seen Nifty 50 VIX rule at about 22-25 as a normal course. In USA, the VIX used to be about 26-27 until a few weeks back. Even crossing 30. So clearly, right now, people are not fearful, but that is not a good idea. Markets, you should always be cautious. Having said that, I think when we compare this euphoria and this kind of frenzy for new age stocks, people ignored the fundamentals. They did not see that the companies are not making profits, they're not generating enough cash flows, and they were just chasing fancied stocks. Again, I must tell you that people who were long-term investors were cautious. Most of the people who lost money were people who were trying to make money on the quick. They thought that this is something where you can make a quick buck, you can buy today and sell tomorrow and make money. I think it's a bad idea. Long-term investors definitely were cautious and probably they will invest at the right price. But short-term speculators always lose money in the market. आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. अमेरिका का बाजार आज बंद था. एशियाई शेयर बाजारों में आज भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं के बीच अधिकतर गिरावट का रुख था. जापान का निकेई सूचकांक 0.4%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.5%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.1% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% की गिरावट में रहे. हालांकि चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.4% की बढ़त दर्ज हुई. इस बीच ताजा समाचार में चीन का केंद्रीय बैंक प्रॉपर्टी डेवलपर्स द्वारा जारी बॉन्ड खरीदने के लिए द्वितीय कंपनियों को सस्ते ऋण देंगे. इस संकटग्रस्त क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला ये अभी तक का सबसे मजबूत नीतिगत समर्थन है. चीन के सबसे बड़े बैंकों ने इस सप्ताह कम से कम $160 अरब ऋण के रूप में डेवलपर्स को देने का वायदा किया है. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां मिला जुला रुख था. लंदन का फुटसी 0.3% की बढ़त पर था, लेकिन फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स 0.2% की गिरावट पर थे. आर्थिक खबरों में इस वर्ष तीसरी तिमाही में जर्मनी का सकल घरेलू उत्पाद वार्षिक आधार पर 1.3% की वृद्धि में रहा. चीन में से जो खबर है कि प्रॉपर्टी डेवलपर्स को ऋण देने की बात है, सपोर्ट देने की बात है, क्या ये कुछ चिंता भी जगाती है? बिल्कुल. देखिए,
चीन में जो प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर जो है चाइना की जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था, और वहां पर हमने देखा है पिछले 2 वर्षों में काफी बड़ा क्राइसिस आया है, काफी बड़ी कंपनीज वहां बंद हो गई, और बल्कि हमने वहां पब्लिक प्रोटेस्ट, जो बहुत रेयर एक एक्टिविटी है चाइना के अंदर, वो देखी हमने कि पब्लिक ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किया जब उनको उनके रहने की फ्लैट्स नहीं मिले। तो अब चाइना की सरकार ने बहुत बड़ा एक कदम उठाया है, $160 बिलियन उनको देना पड़ रहा है, और मुझे लगता है ये सफिशिएंट नहीं होगा। अगर हम चाइना को की इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो चाइनीज गवर्नमेंट को काफी बड़े कदम उठाने पड़ेंगे अपनी ग्रोथ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहां पर अभी अनुमान यह है कि इस वर्ष शायद 4% से भी कम जीडीपी ग्रोथ हो। भारत में हम 6.5 से 7% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना में चैलेंजेस बहुत हैं, पर उनका जो सेंट्रल सेक्टर है वो प्रॉपर्टी सेक्टर है, तो वहां सपोर्ट उन्होंने देनी शुरू की है। अच्छा है, मुझे लगता है कि अगर वो वहां पर ये संभल जाए सिचुएशन तो अच्छा रहेगा। Puneet, I'm trying to understand the logic behind issuing bonds, convertible bonds, I'm assuming, because it can be converted into equity as well. Instead of the bank directly lending to the developer, you have financial firms who would be buying bonds, who are also effectively lending to the developer. How does that work, and what's the logic behind this? There's a technical reason. See, if banks start lending to property developers, and this is not actually these are not rated loans. You know that they're all doubtful debts in a way. So probably the balance sheets of banks will be impaired even further. So government probably wants to circumvent that possibility. They're lending to the financial firms. So the loans on banks' books will remain good, while financial firms will be sharing with the risk. And therefore, I think it is a way of circumventing that balance sheet issue for Chinese banks. लौटते हैं भारतीय परिवेश में। आयुष मंत्रालय और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालयों ने आयुष प्रक्रियाओं और उत्पादों के संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते के माध्यम से आयुष से जुड़ी बुनियादी सोच और सिद्धांतों को समझने की दिशा में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको कितना सिग्निफिकेंट लगता है? एक भारत का यूनिक ये कहें कि यूएसपी है। देखिए, बिल्कुल ये आयुष का जो आयुर्वेद से रिलेटेड जो वेलनेस है, ये एक भारत का बिल्कुल यूनिक एक मैं कहूँगा एक नॉलेज है। इसको हम अगर डेवलप करें, और मैंने भी एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें ऐसा अनुमान था कि यदि हम इस एरिया को डेवलप करते हैं तो ना सिर्फ वेलनेस विच इज ऑफ कोर्स वेलकम, लेकिन उसके साथ करीब 160 से 200 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री बन सकती है, और ये पूरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगी, बिकॉज हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ फाइनेंशियली बट एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिकॉज हेल्थ केयर में हम काफी रिक्वायरमेंट होती है मैन पावर की। तो मुझे लगता है कि इसको हम सिर्फ नैरो अगर लेंस में देखते हैं कि ये सिर्फ एक लिमिटेड हेल्थ उसके लिए है, वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस काफी ज्यादा है, और इसका फायदा पूरी इकोनॉमी को होना चाहिए। In more news, the country's pharma industry has shown a tremendous growth of over 90% in the April to October period of 2022 as compared to the same period of the year 2013. Pharma exports witnessed a growth of nearly 134% since April to October of 2013. Health Minister Mansukh Mandavia said that the country has emerged as a global pharma powerhouse. Now, the country's drugs and pharmaceutical export value stands at over 1,833 billion rupees for the year 2021-22. In the year 2013 to 14, its value was at 904 billion rupees. From COVID pandemic, it seems the pharmaceutical industry and the APIs, which had earlier been a subject of supply chain disruption, have really bounced back. How has that happened briefly? So clearly, I think the spending on healthcare and pharmaceuticals and nutraceuticals, so to say, has really shot up. And India is very good in formulations. We are not that strong in APIs. We still import a lot of APIs. But I think in formulations, we have really come forth. Secondly, I think the support from government in terms of PLI for the chemical sector, for the pharmaceutical sector, that is playing a major role in boosting the pharma sector. और फार्मा एक्सपोर्ट्स में लगभग 134% का उछाल, ये जो आप पहले बात कर रहे थे आयुष के संदर्भ में भी, आपको लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री एज अ होल में बहुत पोटेंशियल एक्सपोर्ट्स? बहुत। देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये काफी एरियाज में हम चीन से, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया का, हम उससे पिछड़े हुए हैं, लेकिन फार्मा
फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम चीन से काफी कॉम्पिटिटिवली प्लेस्ड हैं बिकॉज ऑफ नॉलेज एंड बिकॉज ऑफ अदर इंसेंटिव्स। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा सेक्टर है जहां पर भारत लीडर बनकर उभर सकता है, एंड वी ऑलरेडी सीइंग दैट। In more news, Centre has amended the natural gas tariff authorization and capacity regulations to provide access to natural gas in the far-flung areas at competitive and affordable rates. To simplify the implementation of unified tariff, entity-level integrated natural gas pipeline tariff has been introduced in the regulations, which will act as a building block for unified tariff at the national level. The Petroleum and the Natural Gas Ministry said the amendments in the three regulations is aimed at accelerating the development of the natural gas infrastructure and usher rapid growth of the natural gas market in the country. These amendments will act as stepping stones for implementation of the unified tariff regulations, which will be effective from the 1st of April next year. The ministry has also constituted an industry committee to address the settlement issues for implementation of unified tariff. Puneet, whenever we mention tariff, it is to do with price. And how important is a unified pricing or a tariff structure for access to natural gas and its infrastructure development across the country? So interestingly, India is looking at natural gas as one of the major alternatives to fossil fuels. So we're trying to replace petrol, diesel for cars. We are trying to provide piped natural gas to households. So we are developing this as a major energy source. However, right now in India, you will find there's a great disparity between prices in one state and the other, and which hampers kind of growth of consumption of those products. So I think these are very welcome steps, and we all know the convenience that it gives to consumers and to everybody. So I think it's a very welcome step, and it will also help us in achieving our green goals, really. Let's have a look at what's happening in the oil market. The global crude oil prices rose today amid thin market liquidity, closing the week marked by worries about Chinese demand and haggling over a Western price cap on Russian oil. So the Brent crude oil futures climbed $1.29 to trade at $86.63 a barrel. U.S. crude oil futures advanced $1.56 to $79.50 a barrel. Puneet, even though on a daily basis we are seeing in the futures market the price actually going up by $1.50 for both types of crudes, but macroeconomically, the news is that the demand is likely to spike downwards. So clearly, I mean, you might see some short-term spikes that we are seeing now, but clearly, I think long-term prospects for oil are really down and this is despite the fact that OPEC Plus is trying to cut production, they're trying to somehow control the market. They're still not able to do it. Also, interestingly, if I was looking at data yesterday on oil, the forward month data is now contango. Basically, the future month oil is already at a discount to the present month oil, so the market is telling us going forward we are going to see a decline in oil prices rather than a rise in the market. तो पुनीत जी 5 दिसंबर के लिए किसको ज्यादा परेशानी होगी, रशिया को या वेस्टर्न नेशंस को? देखिए, परेशानी तो दोनों को ही होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, पर मुझे लगता है कि रशिया के लिए चैलेंजेस अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एज इट इज ऑयल प्राइसेस नीचे हैं, करीब $15 से $20 का उनको डिस्काउंट देना पड़ता है अपने ऑयल के ऊपर बेचने के लिए. मुझे लगता है रशिया के लिए ये एक काफी कठिन समय आ सकता है. तो ये प्राइस कैप का जो एक इशू है, आपको लगता है वो रिजॉल्व होगा? हाँ, बिल्कुल. देखिए, आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज आर क्वाइट, और यूरोप ने जो प्राइस कैप रखा है वो काफी लिबरल रखा है. एक्चुअली नीचे नहीं रखा है, थोड़ा सा ऊपर रख रहे हैं ताकि रशिया को भी कुछ उसमें लीवे रहे कि वो उसको सप्लाई कर सके. Russia, the Baku region, why the uncertainty right now regarding supply? Briefly. Largely because of the fact that the infrastructure in Russia has not been able to keep up with the supplies. I mean, essentially that. बता दें कि दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 270 रुपए सस्ता होकर 52,837 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. चांदी 705 रुपए की गिरावट से 61,875 रुपए प्रति किलो पर थी. ब्रीफली, क्या आपको लगता है प्रॉस्पेक्ट आगे सोने और चांदी की? देखिए, सोना जो है वो एक नैरो रेंज में, और पर्टिकुलरली डॉलर इंडेक्स से इसका समावेश रहता है. तो डॉलर इंडेक्स अगर फर्दर गिरता है तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ सकते हैं, पर मुझे लगता है नैरो रेंज में ये ट्रेड करेगा.
समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। पुनीत जी, आप आए स्टूडियो में, आपने हमारे श्रोताओं को विभिन्न विषयों पर बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of the headlines. At the stock market, Sensex gains by 21 points to a fresh all-time high. Nifty also ends at a record high. Ayush Ministry and Science and Technology Ministry signs an MOU to jointly undertake research and development activities, and Centre amends the natural gas tariff authorization and capacity regulations to provide access to natural gas in far-flung areas. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.